Hello everyone and welcome to Wise IAS, your true friend in UPSC preparations. In the series of polity, today is the lecture 3 and we are going to discuss about the salient features of the constitution and the sources from where the constitutional provisions are derived. Let us begin with. Talking about the features of constitution. Before starting with anything, we should know about the source of origin of that. हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो चीज आई कहां से और वो चीज आई क्यों, उसके बारे में, उसकी रूपरेखा के बारे में जानना, यानी कि उसके फीचर्स के बारे में जानना, और वो आई कहां से उसके बारे में जानना, यानी कि उसके सोर्सेस के बारे में जानना। तो ऑन जनवरी 22, 1947 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ वो अडॉप्ट किया था। The objective resolution contained the fundamental propositions of the constitution and set forth the political ideas that should guide the deliberations। यानी कि जिन चीजों के ऊपर हमें चर्चा करनी है या जिन चीजों के ऊपर हमें एम्फोसिस देना है, उन चीजों के बारे में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया गया। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या था? दैट इंडिया इज टू बी एन इंडिपेंडेंट सवर्न रिपब्लिक। इंडिया को एक आजाद मुल्क बनना है जिसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, यानी कि कोई भी बाहर का देश इंडिया के ऊपर ना तो अपना हक जता सके ना इंडिया के ऊपर रूल कर सके। इंडिया अपना एक आजाद मुल्क बनेगा, जो चाहे वैसा करेगा। अपने इंटरनल मैटर्स को इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ना कि कोई बाहर का देश। दैट इट इज टू बी अ डेमोक्रेटिक यूनियन with an equal level of self-government in all the constituent parts। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होंगे, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। हर एक स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक होगी और एज अ यूनियन इंडिया भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेगा। डेमोक्रेसी बोले तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जिस गवर्नमेंट में लोग अपना नुमाइंदा चूज करके उनको रूल करने के लिए भेजते हैं, यानी कि लोग अपने आप को अपने नुमाइंदों से ही रूल करवाते हैं, राइट? That all powers and the authority of the union government and governments of the constituent parts are derived from the people। सारी की सारी ताकत जो गवर्नमेंट के नुमाइंदों में आएगी या जो लोगों के नुमाइंदों में आएगी, जो सरकार के पास आएगी, वो लोगों द्वारा ही दी जाएगी। That the constitution must strive to obtain and guarantee to the people justice based upon social, economic and political equality। तीन तरीके की इक्वालिटी, जस्टिस, ये हमें लोगों को अश्योर करना है, राइट? ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोले तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम उस चीज को कह देंगे, माने कि एक आदमी है ए और दूसरा है बी। अब मान लीजिए ए एंड बी बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर और माइट बी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और माइट बी ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो डिफरेंट होते हुए भी इन दोनों में इक्वालिटी अश्योर करना, जो इनको अवसर मिलेंगे, जो इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो बराबर की होंगी। और इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब जैसे लॉ ए के लिए है वही लॉ बी के लिए होगा। नेक्स्ट, दैट देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वेकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन।
that the constitution must provide just rights for minorities and people from backward and tribal areas. अब इक्वल राइट्स, इक्वलिटी की हमने बात करी, यानी कि माइनॉरिटीज और बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं उनको भी अर्बन एरियाज के लोगों के बराबर ही सब अधिकार दिए गए, so that they can be equal participants of social, economic and political justice. तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो बराबर की हिस्सेदारी कर सके। To frame a constitution that should secure for India a due place in the community of nations, यानी कि इंडिया की अपनी एक इंटीग्रिटी बन जाए एक वर्ल्ड कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को लोग इज्जत की नजरों से देखें। नेक्स्ट, अब फीचर्स की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में इसके बराबर का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं। Constitution can be classified into written constitution such as that of America or unwritten constitution such as that of UK. America is having their own written constitution, पर यूके के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन या तो लिखित होगा या लिखित नहीं होगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटन तो है, साइड बाय साइड इट इज द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। The Constitution of India is a written constitution which happens to be the lengthiest written constitution in the world. It is comprehensive, elaborate and a detailed document. अब इतना लेंथी हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी हमें शेड्यूल्स बनाने की जरूरत पड़ गई। मैंने आपको बताया शेड्यूल्स are those extra details which cannot be explained in the constitution itself. Keeping the brevity in the mind, the constitution, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम शेड्यूल्स का मैटर भी डाल देते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कितना लेंथी और कॉम्प्लेक्स हो जाता। The factors that have contributed to the phenomena are geographical factors. अब हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर्स बोले तो हमारे इंडिया में अगर नॉर्थ साइड पे आप जाएंगे तो एक्सट्रीम कोल्ड भी होगा, अगर साउथ साइड में जाएंगे एक्सट्रीम कोल्ड भी होगा। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बहुत बारिश होती है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा सर्दी है और कुछ ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ इलाके समुद्र के पास है और कुछ इलाके पहाड़ी, इतनी जबरदस्त पहाड़ी है, इतनी हाइट के ऊपर है कि वहां ऑक्सीजन लेवल भी कम है। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो थे उनको ध्यान में रखते हुए, उस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी हुआ। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, राइट, डाइवर्सिटी और हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स यानी कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने रूल करा, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, ये सारे, राइट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया, दोनों को एक ही संविधान जो है वो रूल करेगा। अब हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स थी उस टाइम पे, इंडिया वाज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो उन स्टेट्स के लिए और इंडिया एज अ होल दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज। लीगल लिमिनरीज का मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो लीगल बैकग्राउंड से होने की वजह से अपने डॉक्यूमेंट को इतना डिटेल्ड बना रहे थे कि इसमें किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए, एम्बिग्विटी ना रह जाए, इसको किसी दूसरे गलत तरीके से इंटरप्रेट ना कर लिया जाए।
राइट। नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर उसके सोर्सेस, जहां जहां से हमारी प्रोविजंस डिराइव करी गई, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस थे जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस जो है वो डिराइव करी गई। It has borrowed most of its provision from the constitution of various other countries as well as from the Government of India Act of 1935। अब क्या चीज कहां से बोरो करी, वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल पार्ट जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आई, फंडामेंटल राइट्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आए। दो इट हैज बोरोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड श्योर द बोरोड फीचर्स वर मेड सुटेबल टू द इंडियन कंडीशंस। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट जहां वैसा था, जहां यूएस में था, वो डायरेक्ट कॉपी करके इंडिया में ला दिया गया। यूएस वाली चीज को इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई करा गया, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसको चेंज करा गया। There were many changes made in the provisions to suit the structure of Indian economy, to suit the structure of Indian society. Though we borrowed cabinet from the government from UK, the cabinet is not all supreme as in the case of UK, right? अब यूके में कैबिनेट है सुप्रीम, यूके का फीचर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, पर कैबिनेट इन इंडिया इज नॉट सुप्रीम। The structural part of the constitution is to a large extent derived from the Government of India Act of 1935। स्ट्रक्चरल एक्ट जो था, स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को हम प्यार से बोलेंगे डीपीएसपी। तो डीपीएसपी जो थे derive their inspiration from the American and Irish constitutions respectively। हमारा डीपीएसपी आया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स आए यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। The political part of the constitution, the principle of cabinet government and relations between the executive and the legislature have been largely drawn from the British constitution। कैबिनेट गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था हम यूके से लेके आए, और रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये भी हमने यूके से ही कॉपी करा विथ सुटेबल चेंजेस, राइट। देन नेक्स्ट, preamble of the constitution। in the previous lecture we have discussed in detail about the preamble। I think all of you are clear about the provisions, about the key terms used in the preamble and the importance of the preamble, right? The preamble consists of the ideas, objectives, and basic principles of the Constitution. The salient features of the Constitution have developed directly and indirectly from these objectives which flow from the preamble। अल्टीमेटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस थी प्रीएम्बल के अंदर से ही निकली। प्रीएम्बल इज द जिस्ट। It asserts India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic and a welfare state committed to secure justice, liberty, and equality for the people and for promoting fraternity, dignity of the individual, and unity and integrity of the nation। The words in the preamble, self explanatory words in the preamble,
The elaborate provisions were made afterwards in the Constitution. The objective is made clear in the preamble. The preamble is the nature of Indian state and the objective it is committed to secure for the people. So through preamble, we can just know what the constitution intends to do, right? Democratic system. अब इंडिया इज फॉलोइंग डेमोक्रेटिक सिस्टम. संवैधानिक तौर से हमारे यहाँ पे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार आती है. यहाँ पर कोई भी किंग रूल नहीं करता. पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट, right? The authority of the government rests upon sovereignty of the people. The people enjoy equal political rights. All of the Indian people, all of the public in India enjoy equal political rights, right? Free and fair and regular elections are held for electing governments. There is a separate election commission in India for the purpose of holding elections to ensure the elections are free and fair and the political rights of the people of India are protected in such a manner so that a democracy system can be ensured in India. Election Commission is an independent body. So Election Commission is an independent body. Why there was need of making Election Commission an independent body? If Election Commission was to function under the directions of the government, there was no scope of holding free and fair elections. Right? India is a republic. The preamble declares India to be a republic. Clear. India is not ruled by a monarch or a nominated head of the state. India has an elected head of the state, President of India, who wields power for a fixed term of 5 years. Right? Recently, presidential elections were held. All of you know about this. So chances are UPSC may ask question on some kind of this topic in relation to this presidential election. Keep in mind, UPSC tactfully links your theoretical part with your static portion with your current portion. Question is asked from the static portion in relation to your current portion. Right? After every 5 years, the people of India indirectly elect the president. So why people of India indirectly elect the president? Why they don't elect the president directly? Keeping in view the size of this country, India is having one of the largest population in the world. So holding elections for the office of president, who is just a nominal head. President is a nominal head. So holding elections for nominal head of the country, that would be too much time consuming and too much expensive. So we say कि India is republic, the head of the country is indirectly elected by the people. So how indirectly elected? The people we elect in the Lok Sabha are representatives from various constituencies, participate in the presidential elections. So that is how we indirectly participate in the presidential elections. Right? Next.
India is union of states. So India is a union of states, unlike USA. In India, we follow a federal structure. This federal structure is different from that of USA. Center is having a bias power. Article 1 of the Constitution declares the India that is Bharat is a union of states, not because of the agreement. India is a union of states. We will discuss about the powers of central government and the state government, the power of union and the states. The states were made states because of the ease in administration. A single union government could not have administered this much vast size of country, right? Next, fundamental rights and duties. The Constitution of India grants and guarantees fundamental rights to its citizens. We all have some fundamental rights. We all have some of the fundamental duties guaranteed by the Constitution. The rights are guaranteed by the Constitution, right? The Constitution of India confers the basic principle that every individual is permitted to enjoy certain basic rights, and Part 3 of the Constitution deal with those rights and which are known as fundamental rights. So, Part 3 of the Constitution contains some of the rights. The 6 fundamental rights include right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. The fundamental rights are justificable and are not absolute. Reasonable restrictions can be imposed on these rights, keeping in view the integrity of the nation or some emergency provisions. So, if we say we have some fundamental rights, our rights are the duties of others. हमारे जो अधिकार हैं वो दूसरे इंसान की ड्यूटी बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you are having right to religion, right to profess, practice and propagate any religion. It is my duty not to obstruct you to profess, propagate and practice any religion of your choice. I cannot impose my religion on you. So every right follows some duties. The rights are guaranteed by the Indian Constitution, but reasonable restrictions can be imposed or these rights can be curtailed in cases of emergency or keeping in view the integrity of the nation. So we will discuss in detail which rights and when these rights can be taken away by the government, right? Directive principle of state policy, प्यार से हम इसको बोलेंगे DPSP. DPSP. A unique aspect of the Constitution is that it comprises of a chapter in DPSP. These principles are in nature of directives to the government to implement them to maintain social and economic democracy in the country. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ डायरेक्टिव्स डाल दिए, सरकार को कुछ दिशा निर्देश दे दिए कि आपको जो अपनी पॉलिसी बनानी है
आपको इन प्रिंसिपल्स को ही ध्यान में रख के फिर बनानी, राइट। नेक्स्ट is parliamentary system. The Constituent Assembly decided to espouse parliamentary form of government both for center and for the states. तो parliamentary system यानी कि upper house and the lower house, this system was adopted in the Indian Constitution. In Indian parliamentary system, distinction is made between nominal and real executive head. Right? The Council of Ministers is responsible before the Lok Sabha, the lower house of the Union Parliament. There are close relations between the executive and legislature. यानी कि the parliamentary head, अब पार्लियामेंट में हमारे मिनिस्टर्स जो होते हैं, लेजिस्लेचर की अगर बात करें, पार्लियामेंट इज अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर. Parliament is responsible for making laws on the subjects mentioned in Union list as well as in the concurrent list. Now, the executive is responsible to the Parliament for the acts done by them. The provision is made in the Constitution in order to ensure the executives are not doing any act in their discretion. They are responsible to the people. How they are responsible to the people? They are responsible to answer in the parliament. In the parliament, the people sitting are elected by the entire population of India. Right? So indirectly, they are responsible to the people. Next, federal structure of the government. In India, we have federal structure of the government. A federal state is a state where a country is divided into smaller regions and the government is functioning at two levels. तो फेडरल स्ट्रक्चर बोले तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, and the state government for each state. We have a federal structure, dual government system, right? The Indian Constitution has envisaged a federal structure for India considering the geographical vastness and diversity of languages, region, religion, caste, etc. तो इतना बड़ा भारत था, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर इतना लेंथी बना तो क्या एक सरकार आके उसको एडमिनिस्टर कर सकती थी? इसी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया. We can say we have a three-tier government at the local level, at the state level, and at the union level. Right? Written constitution, supremacy of the constitution, division of powers between union and states, bicameral legislature, independent judiciary, etc. are features of Indian federation. Now, scholars describe India as a quasi-federation. KC, where or as a federation with a unitary biasness. We can say we have a unitary biasness. I will explain how. Or even as a Unitarian federation. So, why there is unitary biasness or union biasness? The central government is given more power and more control in comparison to the state government. You can see in your daily life the major subjects, your defense, it is in the union list. The state government are given the powers only to administer the state level subjects, right? So all the major subjects are kept with the central government or the union government itself, right? Then next,
Universal adult franchisee. We have universal adult franchisee. Every adult member have the right to vote in the elections. All men and women enjoy an equal right to vote. Each adult man and woman above the age of 18 saal has the right to vote. All registered voters get the opportunity to vote in the elections. No one can be denied. No one can be denied of his right to vote. Voting is not only a right, it is a duty more than right. Next, single integrated state with single citizenship. So, India is a state not in that sense you say Kerala, Punjab, Rajasthan. Otherwise, India is a state. When we talk about the international law, the word state refers to country. So, India is a state with single citizenship. A person belonging to state Rajasthan, you say, for example, he cannot be a citizen of Rajasthan first and citizen of India second. He is a citizen of India. Wheresoever you are a citizen of India, not of that state where you reside or live in. We are all equal citizens and citizens of India. India is a single, independent, and sovereign integrated state, right? All citizens enjoy a common uniform citizenship. They are entitled to equal rights and freedoms and equal protection of the state. So, we don't have a dual citizenship. We have a single citizenship. Integrated judicial system. There is integrated judicial system in India. The hierarchy is there are district courts, then we have high courts, then we have Supreme Court. So, in our laws, high court is given superintendence over the district courts, and the Supreme Court is given superintendence over the high courts. There is integrated judiciary. Any person aggrieved from the decision of district court can move to high court, and aggrieved from the order of high court can move to Supreme Court. There is a hierarchy. There is a hierarchy that every person should firstly follow this procedure. He should approach the court of lowest jurisdiction, the court having the first jurisdiction at the first instance. Afterwards, he can move to the next court for appeal purpose. No one can go directly to the high court and file case directly in the high court. कि हाई कोर्ट तो बड़ा है, मेरा केस वहां लगाता हूँ, वहां से जीतूंगा और उसका पैसा ज्यादा होगा. ऐसा नहीं होता. You just have to move your case in the court of having which is having competent jurisdiction and is of the lowest grade, right? So the Supreme Court of India works at apex level, high courts at the state level, and other courts each under the high courts. Supreme Court, apex court of the country, the court, the father and mother of all the courts, is the Supreme Court. It is the apex court. No one is supreme to Supreme Court. No court is supreme to Supreme Court, right? The high courts work at the state level and the district courts at the district level. So there is a hierarchy.
Now, independent judiciary. The judiciary is independent. Likewise, the executive were responsible to the legislature. There is no provision that the judiciary is responsible to the legislature. Judiciary is not responsible to the executive. Judiciary, you can say, has to check the actions of the legislatures and the executives. Judiciary is independent. No legislature or no executive. Legislature to some extent can, but executive cannot interfere into the work of judiciary. No politician can stand up and say कि जज साहब आप इस केस में ये कर दो. No, judiciary is independent and works on the principle of justice, fair play, and equality. It is necessary to secure the philosophical foundations of the rule of law and democracy. अब रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना बहुत आवश्यक. Firstly, the constitution makers created a separate judiciary independent of legislature and executives. सबसे पहला काम उन्होंने ये करा कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग कर दिया. Secondly, the constitution has ensured complete independence of judiciary in the matters of administration and finance. अब what the second point says, suppose here we have judiciary. We have judiciary. So the executives and the legislatures. The administration of judiciary is to be seen by the judiciary itself, not by the executives and not by the legislatures. Right? The administration process of the courts, how the courts are to be administered, the court complexes, everything is seen by judiciary. Right? Then next, amending the Constitution of India. So, the Constitution itself contains the provision to amend the Constitution. Amending the Constitution of India is the procedure of making modification to the nation's fundamental law or supreme law. The Constitution is the fundamental law and the supreme law of the nation. Right? The procedure of amendment in the Constitution is laid down in Part 20, Article 368 of the Constitution of India. Right? This procedure guarantees the sanctity of the Constitution of India and keeps a check on what it says. The procedure guarantees the sanctity of the Constitution of India. अब ये प्रोसीजर जो है ये इस चीज का आश्वासन तो देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम. नो वन कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस एक्सटेंड कि हमारा फाउंडेशन जो है नेशन की, फंडामेंटल लॉ जो नेशन का है, हमारा जो सुप्रीम लॉ है, उसको किसी दूसरे लॉ के अंदर ले आए या उसको खत्म कर. दिस इज व्हाट इट मींस अबाउट द सेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and keeps a check on uninformed part of the Parliament of India. That means the Parliament cannot act in discretionary matter or discretionary manner to amend the Constitution. It cannot do anything what it wants. There is a separate procedure for amending the Constitution. That procedure is to be followed, and the basic structure doctrine which we have seen in the Keshavanand Bharati case, that is to be followed. Next is judicial review. The Constitution has given power to the judiciary to review the actions of the legislature. Now, judiciary is given a power to check whether the legislature has done the acts as per the provisions of the Constitution or the legislature had bypassed the process.
whether the basic structure of the constitution has been shaped or not. The judiciary has significant position in Indian constitution and it is also made independent of the legislature and executives. The Supreme Court of India stands at the peak of single integrated judicial system. It operates as defender of fundamental rights of Indian citizens and guardian of the constitution. So, let us just check what we have read till now. There is a practice question for you. The question is, the judicial review power is part of what? You have the options: preamble, constitutional provisions, basic structure, and last is none. So, talking about the power of judicial review of the courts, we have seen in many of the judgments, Keshavanand Bharti case was talking about the basic structure doctrine. The power to judicial review is having its gist or its foundation in the basic structure of the constitution, right? So it might be somewhere in the power of in the provisions of the constitution, it might be somewhere in the preamble, but basically or broadly we just have to choose our option. It is a power of basic structure, we cannot neglect basic structure, right? Next, basic structure doctrine. As we have seen in the Keshwanand Bharti case, the basic structure doctrine is an Indian judicial norm that the Constitution of India has certain basic features that cannot be changed or destroyed through amendment by the Parliament. That means the Parliament cannot make an option of amendments, or it cannot amend the Constitution so as to change the nature of the Constitution in itself. अपनी मनमर्जी से कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते. You just have to maintain or to adhere to the basic structure of the constitution. You cannot shackle the basic structure of the constitution. You cannot shake the spirit of the constitution. The basic structure is the spirit of constitution and you cannot shake it. The basic structure, the basic feature of the constitution have not been openly defined by the judiciary. It has not been defined, right? At least 20 features have been described as basic or essential by the courts in numerous cases and have been incorporated in the basic structure. आज तक कभी बेसिक स्ट्रक्चर को किसी ने डिफाइन नहीं किया, पर बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई जिनमें बता दिया कि हाँ भाई ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. सो वी कैन हैव एन आइडिया what is in basic structure or what can be in basic structure or what should be in basic structure, right? In Indira Gandhi versus Raj Narayan case and also in the Minerva Mills case, हमने दोनों डिस्कस करे थे. It was witnessed that the claim of any particular feature of the constitution to be a basic feature would be determined by the court in each case that comes before it. इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हमें डिफाइन करना है तो हम उस टाइम पे करेंगे या उस चीज में, इट डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस एंड इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? देन नेक्स्ट,
सेकुलरिज्म, अब सेकुलरिज्म is a feature of Indian constitution. It is also a part of basic structure in the Indian constitution. Secularism, in no other country of the world so many religions coexist as in India. इतने सारे धर्म आप अगर अपने मोहल्ले में देखें तो इतने सारे धर्म के लोग आपके साथ रहते हैं, इतना भाईचारा जो इंडिया में है ऐसा किसी कंट्री में नहीं. In view of such diversity, the Constitution guarantees the complete freedom of religion to all. You can practice, propagate, and profess any religion of your choice. Even you can change your religion by your personal will. No one can force you to opt any of the religion of his or her choice. Even the government can't. The citizens of our country are free to follow any religion and they enjoy equal rights without any discrimination or distinction of caste, creed, religion or sex. जाति, रंग, भेदभाव इस तरीके से किसी के आधार के ऊपर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. और every citizen is free to opt or profess or practice any of the religion. The state does not discriminate against anyone on the ground of his religion. Religion के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. For example, you are preparing for UPSC and because you are of any religion, आपको select करना या ना करना ऐसा इंडिया में follow नहीं होता. You can be selected, आप किसी मर्जी religion से हो. You should be capable enough, right? Nor can the state compel anybody to pay taxes for or support in any particular religion. कोई एक इंसान किसी पर्टिकुलर जाति से है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से है, इस वजह से उसको कोई टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा. The Constitution regards religion as a private affair of individuals and prohibits the state from interfering with it. ये लोगों का एक प्राइवेट अफेयर है, प्राइवेट चीज है जो वो अपनी मर्जी से करेंगे. और इंडियन द नेशन or the government cannot interfere in it. The Constitution also grants various cultural rights to the minorities. Right? Then next, independent bodies. Constitution has set up various independent bodies and vested them with the powers to ensure constitutional provisions. इलेक्शन कमीशन मैंने आपको बताया. इलेक्शन कमीशन के बाद आपका कैग का ऑफिस है, फाइनेंस कमीशन. हम डिस्कस करेंगे ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जिक्र किया है और उनके बारे में हम डिटेल में भी आगे भी चर्चा करेंगे. These institutions have been provided with security of tenure, fixed service conditions, etc. to ensure that they are not susceptible to the whims of either the legislature or executive. अब इनको ये चीजें फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्यों दिया गया? So that they can work independently. No politician can come and say कि इस बंदे ने मेरा पर्दाफाश किया था, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा. ऐसा नहीं होगा. They are independent. They are having security of their term. Right? Their salaries or allowances cannot be diminished to disadvantage them because of any matter. Right? 3-tier government. 73rd or 74th Amendment Act of the Constitution. We have rural and urban local bodies as an additional constitutional tier of the government structure. It is talking about your panchayats and municipalities. This section fulfills the dream of Gandhi ji to see a self-functioning villages in India. गांधी जी का ड्रीम हुआ करता था कि जो गांव है वो अपना संचालन खुद कर सके. Emergency provision. Indian Constitution also contains some of the elaborate emergency provisions. So what to do in the case of financial emergency or national emergency? There might be a contingency. You can see the framers of the Constitution.
वो इतना दूरदर्शी थे कि उन्होंने ये भी सोच लिया कि कल को आगे जाके हो सकता है कि नेशन को नेशनल इमरजेंसी का सामना करना पड़े, एक्सटर्नल एग्रेशन का सामना करना पड़े, हमारे ऊपर कोई हमला बोल दे तो क्या होगा। तो इमरजेंसी प्रोविजंस बनाई गई जिस केस के अंदर यूनियन गवर्नमेंट कैन अज्यूम द पावर ऑफ अ पार्ट और ऑफ द एंटायर नेशन, स्टेट गवर्नमेंट को सुपरसीड करके। तो ये चीज नेसेसरी भी थी, दे वर विजनरी, राइट। Indian Constitution contains elaborate provisions to deal with those challenges that pose a threat to the country's security and unity. It will be discussed in detail in upcoming lectures. तो इमरजेंसी प्रोविजंस को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। शायद एक पूरा लेक्चर ही इमरजेंसी प्रोविजंस पे बनेगा, राइट। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इनफ कि कुछ पार्ट तो अमेंड करना बहुत मुश्किल है और किया नहीं जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर इट कैन नॉट बी अमेंडेड, और इट इज फ्लेक्सिबल इनफ कुछ पार्ट को अमेंड करना बहुत आसान है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन जिसको अमेंड करना बहुत मुश्किल, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करना बहुत आसान, ब्रिटिशर्स का। The Indian Constitution is a unique example of a constitution of rigidity and flexibility. Combination है ये दोनों का। A constitution may be called as rigid or flexible on the basis of its amending procedure. क्या वो अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये चीज उसको बताती है क्या वो रिजिड है या वो फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब मैंने ये पहले ही डिस्कस करा, वी हैव अ फेडरल सिस्टम with a unitary biasness. The federal system is because the central government has more power than of the state government. There is unitary biasness. So federal system मतलब we have central government and we have state government. Because central government is having more power, we can say there is unitary biasness. So synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Parliament is sovereign and judiciary is supreme. The doctrine of sovereignty of the parliament is associated with the British Parliament, while the principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court. तो वी कैन जस्ट सी कि कौन सी चीज हमने कहां से इंकलकेट करी और इंक्लूड करी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। Just as the Indian parliamentary system differs from that of British system, the scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of what exists in US. Right? This is because the American Constitution provides for the due process of law against that of the procedure established by law. Contained in the Indian Constitution, Article 21, we follow procedure established by law. On the other hand, Americans follow due process of law. Therefore, the framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and American principle of the judicial supremacy. तो हमारे पास इन दोनों का ब्लेंड है, मिक्सचर है। The Supreme Court can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. Judicial review हमने डिस्कस करा। The Parliament can amend the major portion of the Constitution through its constituent power. तो पार्लियामेंट भी अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते। नाउ वी विल डिस्कस कि हमने कौन कौन सी चीज कौन कौन सी कंट्री से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट आया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का, joint sitting of the two houses of the parliament in cases of deadlock. डेडलॉक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। कनाडा से आया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वोटिंग ऑफ रेजिडुअरी पास इन द सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पास विद द सेंटर, दैट इज द कंकरेंट लिस्ट।
Appointment of state governors by the center. Advisory jurisdiction by the Supreme Court. आयरलैंड से हमारे पास आया डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन टू ऑफ द प्रेसिडेंट. जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सो जापान से भी, एक छोटा सा कंट्री है चाहे जापान, पर वहां से भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज ली. सोवियत यूनियन यूएसएसआर, जो कि अब रशिया है, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली. आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये वहां से आया प्रियम्बल में जो हमने इंक्लूड करी हैं चीजें. यूके, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म. यूएसए, fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of supreme court और high court के judges. वाइस प्रेसिडेंट का पद यूएस में है. साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. फ्रांस से रिपब्लिक, द सेंस ऑफ रिपब्लिक, द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक एंड द वर्ड रिपब्लिक, ideas of liberty, equality and fraternity in the preamble. जर्मनी से suspension of fundamental rights during emergency. So, although we have borrowed many things from many countries, क्या हम बोलेंगे कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड बैग है, क्या कॉपी पेस्ट किया हुआ है? ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है. हमने कुछ चीजें बाकी लोगों से या बाकी दुनिया की जितने भी बड़े बड़े देश, कुछ नए कॉन्स्टिट्यूशन वाले थे, कुछ बहुत ही पुराने कॉन्स्टिट्यूशन वाले थे, हमने उनसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें डाली, पर डाली इस तरीके से सो दैट दे कैन बेस्ट सूट द इंडियन इकोनॉमी, द इंडियन कल्चर. तो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके असली इंसान या अक्लमंद इंसान तो वही है जो अपने तजुर्बे के साथ साथ लोगों के तजुर्बे से भी सीखता है. राइट? So, this was all about today's lecture. Let us practice a question now. So, the question is, just try to recognize or remember what we have read in this lecture and just count on your fingertips the points you know. Discuss in detail the various features of the Indian Constitution. So at least you should count 15 points. You need to explain them in 2 or 3 lines. You have to attempt your answer in 250 words to the maximum, right? So let us now practice another practice question. So the question is, DPSP, Directive Principle of the State Policy. The concept is derived from which constitution or which country? The concept is derived from which country? Is derived from. Your options are UK, then USA, then France, then
Ireland, or your Irish constitution. So just recognize what we have read about it. You can easily answer this question. Just write it down or think about it. We will discuss the answer in the next video. Thank you for being with us.